Hello, hello. तो जब आम जानवा कि व्हाट डू मीन बाय हीट वेव्स जब आम गोटे एबनॉर्मली आम देखा कि गोटे बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल होता है पीरियड होता है जोटा कि एबनॉर्मली अनकंफर्टेबली हॉट वेदर बुझ तो एबनॉर्मली अनकंफर्टेबली जब आम कह कि हीट वेव माने कौन तो हीट वेव माने होचे कि गोटे पीरियड होइतिबो गोटे टाइम पीरियड नंबर जेतेबेले कि एबनॉर्मली अनकंफर्टेबली हॉट वेदर आपण माने एक्सपीरियंस करूछंती ताको हम कोन कहबे हीट वेव को कंडीशन हे परबो हाई प्रेशर हे परबो को कंडीशन ले हबो हाई प्रेशर जदि थिबो से हाई प्रेशर रे क्रिएट करबो आ कोन परबो जदि देखिबो जदि एवरेज जो भी टेंपरेचर अछि सपोज कि गोटे एरिया रे एवरेज टेंपरेचर अछि 30 डिग्री सेल्सियस जदि 5 कंसेक्यूटिव डेज पाए 5 consecutive days by this temperature will increase from 30 degrees Celsius to 35 degrees Celsius means 5% increase for 5 degrees Celsius increase in the temperature for 5 consecutive days ताको हमें कौन कहबे कि भाई हीट वेव वाला कंडीशन हमको लागो तो प्रॉब्लम कौन ना प्रॉब्लम हो कि जो शिफ्टेड हो जाए कि सीजनल इश्यू why because जेतेबेले आम हीट वेव मान एक्सपीरियंस करबा एट व्हाट टाइम ड्यूरिंग द समर टाइम रे आम हीट वेव एक्सपीरियंस करबा बिकॉज कि से समय हम कोन सन टिके बेसिक क्लोजर अछि बट टू ए सिस्टमैटिक नेशनल इमरजेंसी आसी गलानी कोन पे केवल हीट वेव रो हेल्थ इंपैक्ट अछि कि ह्यूमन हेल्थ ऊपर भी यार कोन करबो प्रभाव पकेबो एनवायरनमेंट ऊपर भी यार प्रभाव पकेबो कि यस एनवायरनमेंट ऊपर भी यार प्रभाव पकेबो आपर इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर भी प्रभाव पकेबो जहाँ जहाँ सब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी से सब खराब हो एसी हो गला से सब जिन चलबन बिकज ऑफ द ओवर यूज आ देखो जिते भी आपर हीट अधिका हम से आम कौन कर डिपेंडेंट होते इलेक्ट्रोनिक्स इलेक्ट्रोनिक्स जो यूज अच्छी तो फास्ट एक्सेसिव यूज इज लीडिंग टू द कि एनवायरमेंट रे कौन करुच्ची ना पॉल्यूशन क्रिएट करुच्ची ता सहित आपनकर कौन होची ना कंजप्शन बढ़ाऊँ जोटा कि जदि आम कहबा कि डिपेंड आम एबे भी फॉसिल फ्यूल ऊपर ही डिपेंड करछंती रेदर देन कि रिन्यूएबल एनर्जी स्टिल वी आर नॉट 100% कन्वर्टेड इनटू रिन्यूएबल एनर्जी जो भी आमर एनर्जी सोर्स अच्छी बोले इंडिया रे 60 to 70% एनर्जी सोर्स आर फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स तो से जब आम तांको ऊपर डिपेंड करेंगे तो ऑब्वियसली कौन हम ना नेचुरल रिसोर्स जो नेचुरल रिसोर्स अच्छी सेटा भी कौन हम ना से भी डिग्रेज हम ता सहित आपर कौन हम ना एनवायरमेंटल इंपैक्ट विल बी पोस्ट एनवायरमेंटल इंपैक्ट तो एनवायरमेंटल इफेक्ट कौन है आहरी वर्सन है तो प्रॉब्लम हो कि जो सीजनल इश्यू आम कहते कि समर ड्यूरिंग समर इंडिया एक्सपीरियंस हीट वेव्स बट नाउ द सिचुएशन इज डिफरेंट व्हाई बिकॉज नाउ इट इज शिफ्टेड फ्रॉम seasonal issue to a systematic national emergency because if heat waves continues for a prolonged period of time then it will also impact the productivity of the population तापर अपन एनवायरनमेंट खराब हो गला तापर हेल्थ इश्यू स्टार्ट हम अपन बाहर को जाइए तबियत खराब हो तो ये सब जिन प्रॉब्लम स्टार्ट होगा लगे तो केते इफेक्ट करछि 57% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट माने मोर देन 50% ऑफ डिस्ट्रिक्ट नाउ क्लोज टू 60% expanded beyond traditional region and now impart diverse geographies where traditional region माने जो जगह रे because of the sun movement को जगह रे हमको अधिका सोलर इंसुलेशन होची से सब जगह छाड़ी के भी सब जगह को
जदि 57% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को ना केते जगह को जाउथो इमेजिन करतो सब जगह को कोठी ना कोठी हीट वेव स्प्रेड हे सारलेनी द बर्डन इज अनइक्वल फेलिंग हेवीली ऑन इनफॉर्मल वर्कर्स जदि हम देखिए कि बर्डन जो भी अछि दैट इज अनइक्वल नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हीट वेव जदिओ आमर कंट्री रे बेसी बेसी हेकी जाउची तो इम्पैक्ट इज अनइक्वल दैट मीन्स poor population basically women or who are working in the informal sector they are being more adverse they are being more prone to the heat waves rather than the जो मैंने अपन मानकर heavily informal worker अछि जो मैंने अलगा जो मैंने काम कर कारण सेमान ऑफिस में एसी अछि सेमान अलगा सब फैसिलिटीज अवेलेबल अछि पर जदि अपन माने देखिबे इनफॉर्मल जो मैंने जॉब करछन सेमान पयका heat wave is getting more worse conditions creating more worse conditions despite strong scientific evidence गवर्नेंस रिमेन्स वीक साइंटिफिक एविडेंस जदियो अछि फिर भी कौन अच्छी ना गवर्नेंस रिमेन्स वीक गवर्नेंस बहुत ज़्यादा वीक अच्छी द रियल क्राइसिस लाइज इन ए लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिस्कल वैक्यूम दैट फेल्स टू एंश्योर प्रोटेक्शन एंड जस्टिस प्रोटेक्शन एवरीबडी और एवरी इंडिविजुअल फ्रॉम द हीट वेव एंड जस्टिस की जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होची तो कोर्ट ना कोर्ट एटा इनजस्टिस होची नेचर कौन अच्छी यार ना geographical expansion of heat waves once confined to the north west and central plains कोड कोड जगह थिला ना नॉर्थ वेस्ट थिला और सेंट्रल प्लेन्स रे थिला जेमते राजस्थान होला नॉर्थ वेस्ट को राजस्थान आसुची गुजरात आसुची नाउ एक्सटेंड टू ह्यूमिड कोस्टल एंड टेम्परेट रीजन शोइंग ए क्लियर नेशन वाइड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीम हीट कंडीशंस तो एक्सट्रीम हीट कंडीशन आम सब आड़े देखुं कोस्टल साइड को भी ह्यूमिड साइड जो कोस्टल साइड अच्छी से जगह को भी आसी सारे राइजिंग इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ हीट तो हीट कौन हो ना बहुत ज़्यादा इंटेंस भी हो जाऊँगी और फ्रिक्वेंसी भी बढ़िया को लगे तुम मैंने निजे ही एक्सपीरियंस करुवे कि जो मैंने 2 years के 3 years बिफोर हाउ वाज द कंडीशन हाउ यू फील ड्यूरिंग द समर्स और नाउ एबे तुम मैंने कौन फील करमिति फील कर The last 2 years have recorded unprecedented temperature, indicating that heat is no longer seasonal, but a recurring and structural challenge. तो कहता है seasonal है कि नहीं, गोटे recurring माने बार हवा recurring and structural माने कोट ना कोटे structural issue होची, structure रे कोट ना कोटे issue होची, जो ताकि India is experiencing heat wave very frequently, not on a seasonal basis but everywhere almost. Scale of exposure across districts, more than 57% of Indian districts are classified as heat prone, which shows that a majority of regions are now under regular heat stress. तो कोट ना कोटी majority of the population में कौन अच्छी heat रो stress से मैंने feel करूँ चंदी बोले. Okay. तापर impact कौन हबो? Impact कौन हबो? जल्दी अपन माने करो heat wave आसिला तार impact कौन हबो? ना thermal inequality across सोसाइटी तो सोसाइटी में कौन होगा थर्मल माने जो टेम्परेचर इनइक्वालिटी होगा व्हाइल हीट कवर द एंटायर कंट्री इट्स इंपैक्ट इज अनइक्वल एज द एफ्लुएंट मैनेज इट थ्रू कूलिंग सिस्टम whereas 400 to 49 million informal worker face severe exposure and risk to life जो माने पाखरे एफ्लुएंट माने जो माने पाखरे ऑलरेडी फाइनेंशियल कंडीशन इज गुड एलाइट पॉपुलेशन अछंती बा अपर क्लासेस जो माने अछंती दे कैन मैनेज इट व्हाई बिकॉज़ दे कैन बाय सम कूलिंग सिस्टम ऐसी है गला बाकी वगैरह जहाँ भी है गला बट व्हाट अबाउट द पीपल हु आर वर्किंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर जदि तुम जाऊथबो जेंकि काम करथबो डेली बेसिस रे तने सी कोन करियो तापर तो इंपैक्ट बहुत ज्यादा एडवर्स पड़िबो कि नहीं लैक ऑफ कूलिंग ऑटोनॉमी अमंग वर्कर्स ओके कूलिंग ऑटोनॉमी अमंग वर्कर्स अछि ओके तो नेशनल वाइड तार इंपैक्ट केमती पड़ो
तो जो मानक पाखरे जो माने ऑलरेडी मार्जिनलाइज अछंती जो माने पुअर अछंती एंड स्पेशली फॉर द वुमेन हे गले इनफॉर्मल सेक्टर जो माने अछंती से माने पई इंपैक्ट अधिक पड़ो। तो इमेजिन करो जेमति कि आपण मानकर हेबे सपोज जेमति हम कहउछंती कि दिल्ली रे पोल्यूशन बॉडी बॉडी चलची तो पोल्यूशन पई का जो भी इक्विपमेंट अछि दैट कैन बी ब्रॉट बाय द एफ्लुएंट पॉपुलेशन राइट। तो जो माने किणी पारिबे से जिंस जेमति आपण मानकर बहुत लोग किणी कि पोल्यूशन को रेगुलेट करिया पई बट जो माने एफोर्ड करि परिबेनी सेमानक ऊपर पोल्यूशन इम्पैक्ट हाईएस्ट पड़ो बुझिपारछ जो माने एफेक्ट करि परिबेनी एफोर्ड करि परिबेनी तो सेही भली भाबरे आपन हीट वेव कंडीशन से केतरा लोक अछन जो माने एसी को एफोर्ड करि परिबेनी इवन दे आर वर्किंग इनफॉर्मली in those sector maybe air conditioning but cooling system is not so efficient or not available at all तो सेमानक ऊपर बहुत ही ज्यादा यार इम्पैक्ट पड़ो। lack of cooling autonomy among workers such as construction laborers को माने जो माने कंस्ट्रक्शन ले काम करछन जो आपण मानकर डेवलपमेंट होची बहुत ज्यादा हम कहछन कि डेवलपमेंट दरकार who are working कौन से बिल्डिंग बनाला रोड कंस्ट्रक्शन होला इंफ्रास्ट्रक्चर होची बहुत सारा गवर्नमेंट पाई का भी जदी रोड कंस्ट्रक्शन हो तो रोड तो ऐसे लागिबन ना तो सेति पाई का प्रॉब्लम होची। स्ट्रीट वेंडर जो मन रास्ता रे ठिया कि बिकुछन स्ट्रीट वेंडर रे गेला इन डिलीवरी एजेंट्स एबे तो डिलीवरी एजेंट मानकर डबल बर्डन हो जाय बाय गिग वर्कर्स तो बेसिकली एमान को ऊपर हीट रो केते मात्रा रे तो केते में सेति पाई सब देखिबो कि इवन कि देयर इज अ कूलिंग सिस्टम इन हेलमेट तो से कूलिंग सिस्टम वाला हेलमेट केते जण एफोर्ड कर परछन बुझबो अन्य माने समस्ते तो ओला रे जाउछो उबेर रे जाउछो you have watched yourself what are the inferior qualities of helmet they are using too much inferior that cannot provide the protection still they are using that because of the financial issue because they do not have the money to afford a better one तो सेमानक ऊपर आउरे हीट रो केते मात्रा इम्पैक्ट पकेबो no control over their work conditions which makes them continuously exposed to extreme heat तो कोड ना कोड से कंटिन्यूअसली एक्सपोज होचंती टू द एक्सट्रीम हीट ओके। देखो भुवनेश्वर रे एबे जति मात्रा रे खरा होची बट आमे घरे बसचंती कि भी जो नॉर्मली ऑफिस से जदी के भी जॉब करची आईटी सेक्टर जॉब करची तो एयर कंडीशन रे रूम रे पूरा बसचंती भोक लागले ठीक अछि चल आमे ऑर्डर कर दबा स्विगी अछि जोमेटो अछि फिर आमे ऑर्डर कर दबा बट जदी हम सेते ऑर्डर करछन ना सेति रे भी हमको कोन होची ना से आसी हमको डिलीवरी दोची तो कोठी ना कोठी कोन ना हमर आमे खुशी रहिचंती आमे भलो रहिचंती तांको ऊपर इम्पैक्ट तो पडुची ना जस्ट बिकॉज़ कि दे आर इनफॉर्मली वर्किंग तापर लाइक डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी एंड इनकम तो जदी हीट बहुत ज्यादा रहिला लोकंगर जदी ओके ठीक अछि जने काम करिवो केते करिवो ता देह जदी खराब हे गेल तो प्रोडक्टिविटी रे तो कोट ना कोठी कमी आसीबो से करिवो ही नाही आ इनकम जो माने काम कर माने डेली लेबर अछंती सेमानकर जो भी इनकम अच्छे दैट डिपेंड अपॉन कि हाउ मच डेज दे आर वर्किंग इफ दे आर नॉट वर्किंग ताले इनकम भी सेठी कोन हो रिड्यूस हो जिवो। स्टडीज शो दैट इवन a small rise in temperature causes a significant fall in productivity and earnings forcing worker to choose between health and livelihood माने तुम जेमि बंचिया तुम जो जरिया अछि बंचिया पई जो जिंस तुमको दरकार कोन दरकार पैसा दरकार तो लाइवलीहुड केमती आसबो ना आपण माने इनकम केमती करिवे ना जते बेले आपण माने इनकम करछन केमती करिवे ना आपण मन को इनकम करे पे लाइवलीहुड डिपेंड अछि आपण हेल्थ डिपेंड अछि तो कोड ना कोडी तंग पर कंफ्यूजन आसुजबा कॉन्फ्लिक्ट आसुजी बट बोथ आर इंटर रिलेटेड हेल्थ खराब हेले काम कर परबन हला और बे काम गोटे बियॉन्ड कि तमर हेल्थ रो बियॉन्ड को जाई करूछो you know that this much temperature my body cannot bear still you are working just to live or just to maintain your livelihood सेपन तले कोन हो त दुटा जगह जिंस आपनकर इंटरकनेक्टेड तो सेतमै ही तांको मानको इंपैक्ट बहुत पड़िबो प्रोडक्टिविटी भी लेस हो। सेक्टर स्पेसिफिक ऑक्युपेशनल वल्नरेबिलिटी ओके तो जदी आपण को सेक्टर रे कोन काम करछन ता ऊपर डिपेंड करबा आपण मानकर ऑक्युपेशनल वल्नरेबिलिटी कंस्ट्रक्शन वर्कर face heat from physical labor and materials while gig workers face algorithm driven pressure that discourage rest even during heat alert बुझ परछो gig worker माने डिलीवरी हे गला जोमेटो हे गला स्विगी हे गला इंस्टामार्ट हे गला blink it you just blink your eyes and your delivery is on your doorstep but the thing is that सेमान को रेस्ट ही करिया को टाइम नै भाई सेमान को करिया पे ही पड़िबो तापर असला क्लाइमेट कास्ट नेक्सस इन exposure sanitation workers waste pickers work in micro climates up to 5% hotter
which shows that socially marginalized groups face higher hit risk. जो मैंने कौन अच्छे वेस्ट जो मुंह सफेई वाला जो आसुचंदी तो से मैंने देखिबो कि दिन सारा से मैंने चले चले नहीं खरा हो वर्षा हो जहाँ भी हो सफा कर दायित्व से कम से लगी आ जो मैंने सैनिटेशन वर्कर हो से माने भी सब लगी से माने कौन होचंदी ना बहुत ज्यादा माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन में काम करते माइक्रो माने क्लाइमेटिक कंडीशन को छोटे छोटे भाग में डिवाइड करे माइक्रो माने स्मॉलर स्मॉलर क्लाइमेटिक कंडीशन सेठी से मैंने कौन करे ना 5% हॉटर if you are experiencing 35 degrees celsius of it they are experiencing 40 degrees celsius of it बुझी पड़छो तो सेटा तंका ना कोड ना कोड नेगेटिव रे आसुची तो तंका तंको प्रॉब्लम हबो तापर कोर इश्यूज कोन अछि लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी वैक्यूम तो जो वैक्यूम है फ्रॉम द लेजिस्लेटिव फ्रॉम द बाय द लेजिस्लेटिव और पॉलिसी अगर देखिबा आउटडेटेड लेबर लॉज कवरेज the factories act 1948 protects only indoor workers excluding those most exposed to heat तो ये सब जिनसे क्रिटिकली एग्जामिन वाला तुमको किसी क्वेश्चन पचरला then you can write about this कहीं ना देखो जमती कि हमें कहते ना our country is evolving mankind is evolving society is evolving but at the same time those laws was already outdated we're still applying those law on our society which is not correct okay तो से देखिए कि आउटडेटेड लेबर लॉ है सारानी केवल कौन फैक्ट्रीज दैट 1948 कौन होची ओनली इंडोर वर्कर हु आर वर्किंग इंडोर्स बट व्हाट अबाउट हु आर वर्किंग आउटडोर्स एंड हु आर वर्किंग आउटडोर्स दे आर मोर प्रोन टू द हीट वेव्स देन द वर्कर्स हु आर वर्किंग इंडोर वीक प्रोविजन OSHWC कोड 2020 माने ऑक्युपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशंस तापे कौन अच्छी ना सेक्शन 23 रे कौन अच्छी allow the government to notify heat standards but does not make them mandatory resulting in absence of enforceable safety norms तो गवर्नमेंट कौन करिवो ना कोठी एकटो माने कौन करिवो ना नोटिफिकेशन आसिया पई तो अच्छे देयर इज अ प्रोविजन बट द प्रॉब्लम इज कि देयर इज दिस इज नॉट मैंडेटरी इफ नॉट मैंडेटरी एंड वॉलंटरली यू आर डूइंग मीन देन देयर इज अ चांस कि से जिंस भल भाव इम्प्लीमेंट हो पार ना मैंडेटरी जिनस ही आम कंट्री भल भाव इम्प्लीमेंट होनी जो मैंडेटरी नुह इमेजिन अबाउट दैट ओके एक्सक्लूजन ऑफ हीट वेव्स फ्रॉम डिजास्टर लिस्ट तो एक्सक्लूजन ऑफ हीट वेव्स डिजास्टर लिस्ट आमर डिजास्टर जो लिस्ट अच्छी से हीट वेव्स ना हीट वेव्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नोटिफाइड डिजास्टर लिस्ट which restricted access to national level funding and coordinated response जदि कौन भी जिनस आपर डिजास्टर लिस्ट रे आसो तो से डिजास्टर लिस्ट किसी भी जो प्रोब्लेम होची कौन हम ना आप नेशनल लेवल फंडिंग आसो बुझीपार तो स्टेट मान को फंडिंग करा जाए फ्लड्स होगला साइक्लोन्स आसीगला ड्रॉट आसीगला इन ए पर्टिकुलर स्टेट देन सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू फंड बट द प्रॉब्लम हियर जदि एक्सक्लूजन कर देछन हीट वेव्स इज नॉट इन द डिजास्टर लिस्ट तो ये कौन हम ना तुमको फंड मिलूँ ना कोऑर्डिनेटेड रेस्पॉन्स मिलूँ कौन से कोऑर्डिनेटेड रेस्पॉन्स भी हमारा नहीं तापर फिस्कल लिमिटेशन थ्रू 10% ट्रैप स्टेट्स कैन यूज ओनली 10% ऑफ स्टेट्स डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड फॉर हीट रिलेटेड रिलीफ व्हिच इज इनएडिक्वेट फॉर एड्रेसिंग लार्ज स्केल क्राइसिस तो मैं कहली ना कि आपण मानकर 57% ऑफ डिस्ट्रिक्ट 57% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स नाउ affected by the heat waves in a country but only 10% okay use only 10% of the state disaster response fund so 10 जदि आपण मानकर state disaster response fund रे if you are having 100 crore only 10 crore you can spend on the heat crisis which is really inefficient or inadequate to solve a crisis in a large scale जो crisis होची ताको solve करबा it's nearly impossible dependence on advisory based governance most policies remain non-binding advisories mean only advisable only this policy will be advisable not binding on the government not binding on the government is not going to do this depend on the discretionary power of the government whether the government is willing to do so or not mandatory which lack accountability and fail to ensure implementation on ground जदि कौन जिनस मैंडेटरी हेनी एडवाइजरी हम अकाउंटेबल माने कौन जानते ना ना अकाउंटेबल माने इफ यू आर डूइंग समथिंग और यू हैव टेकन सम डिसीजन एंड द डिसीजन हैज रिजल्टेड इन नेगेटिव consequence or bad consequence or the output is negative then
you will be accountable for that. Question will be asked for you. You are accountable to the law. Upon manku question pachare jiba and you have to give the answer. But something is advisory. Something somebody tell you to listen or don't listen. Okay, ଯେମିତି କି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା ଘରେ ଯଦି ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯିବ କି ଗୁରୁଜନ ଆସିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ପନିଶମେଣ୍ଟ ଅଛି କି ଏଇ ଜିନିଷ ନ କଲେ ତତେ ମାଡ଼ ହିଁ ହବ ଏକାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଯିବ ହ୍ୱାଇ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ ହାପେନ୍ ତ ତମେ ତାକୁ ଡରିକି କରିବ କି କରିବନି ହେଲା ଅଫିସରେ ତମକୁ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ଅଛି ଅଫିସରେ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିକଜ ଏକାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ନ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଲାରୀ କଟିବ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ପେନାଲ୍ଟି ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟେ କିଛି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦିଆଯିବ कि ठीक अच्छे आडभाइस कराला कि ऑफिस सरला पर 5 मिनट 10 मिनट तुम एक्सट्रा रही भल हम आडभाइजरी इट नॉट डजंट डिपेंड जब आप काम सरी जाइए डिपेंड्स अपॉन यू वेदर यू वांट टू स्टे और नॉट स्टे तो आडभाइजरी माने यू आर नॉट अकाउंटेबल नथिंग विल बी हैपन इफ यू डोंट ओबे टू दैट रूल्स बिकॉज इट इज आडभाइजरी और इट द पॉलिसी तो से कौन हो ना आडभाइजरी बेस्ड जो गवर्नेंस अच्छी तो कौट ना कौट अकाउंटेबिलिटी लैक करुच्ची आउ एनश्योर कर माने फेल कर दउची एनश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ले तार इम्प्लीमेंटेशन केमती हबो ताकू से एनश्योर करवाटा से कौन होची ना फेल होची एक्सक्लूजन ऑफ इनफॉर्मल एंड गिग वर्कर तो इनफॉर्मल और गिग वर्कर्स रिमेन आउटसाइड द फॉर्मल लीगल प्रोटेक्शन फॉर्मल जो भी वर्कर्स अच्छे ना से हेल्थ बेनिफिट्स रहिबो इंश्योरेंस रहिबो समथिंग हैपन while working in the industry then something happened to the laborers then the industry has to compensate but informalness indication and there is also no job security if you are working in the informal sector then nothing will happen and gig workers zomato boy hegala delivery boy hegala if they are delivering and if they are coming something happen accident happen so do you think that zomato is going to pay no they may pay out of kindness but not mandatory okay the legal protection which increases their vulnerability during the extreme heat तो सेमानकर vulnerability कोंगे कौन कोच ना increase करूच तापर policy और legal reforms कौन आसे दरकार inclusion in notified disaster list part जो heat wave अच्छी ताको अपनो disaster list रे notify करंतु so that कि central government और national जो funding system अच्छी they can be aid to the state during emergency heat waves should be included in notified disaster list for the 2016 to 31 period as recommended by finance commission तो ये current affair जो finance commission आसला 16th finance commission तो recommended करिछ में तक हमें notify करि परिबा This will allow states to access National Disaster Response Fund support and remove current funding limits. Current funding limit was 10%. Okay. तो जहाँ भी अपन मानकर National Disaster Response Fund अच्छी, okay, 10% for the state disaster fund, while also making heat alert legally binding for administrative action instead of simple advisory. Advice ना देके legal तक binding कर देता है कि administration should be very quick or administration to take action if there is increase in the heat wave. Adoption of heat index as standard using heat index temperature and humidity will provide a more accurate measure of risk especially for coastal and humid region. Mandatory level safety rules binding rules like work set cycles or personal protection equipment provisions must be enforced under OSHWC code जोटा कि 2020 जो कोड थिला ता भीतर अपन मानकर बाइंडिंग रूल्स माने केमती वर्क रेस्ट साइकिल हबा दरकार काम करिवे कंटिन्यूअसली वन पर्सन शुड नॉट वर्क फॉर 8 hours 9 hours 10 hours that should be rest time okay तापर आसला recognition right to cool का अपन को recognition करिया पे पड़िबो इज अ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 to ensure access to cooling shelter and public water facilities कोड है केरला रे ना चेन्नई रे जो जोमेटो माने डिलीवरी बॉय तक रेस्टिंग वाला रूम्स बनाई छी सो दैट कि सेमान सेठी बसी की कोन करबे कि समय पे रेस्ट नै परिबे ओके एसी वाला तको चेंबर दे छी वाटर अवेलेबल कराई छी कोन नै कराई छी सो दैट कि दे शुड नॉट फील स्ट्रेसफुल और ह्यूमन हेल्थ को इंपोर्टेंट दबा पे जिंस कराई छी प्रोटेक्शन ऑफ हाई रिस्क ऑक्युपेशन स्पेशल डायरेक्टिव्स आर रिक्वायर्ड फॉर सैनिटेशन वर्कर हे गेला माइनिंग वर्कर हे गेला जो माने कि बहुत ज्यादा प्रथम तो से माने रिस्क ऑफ हीट अगेन टॉक्सिक एक्सपोजर भी होचो सैनिटेशन तो माने ऑलिया सफा करचंदी तो से माने को तो टॉक्सिक को भी एक्सपोजर होचन ऑलरेडी और हीट भी अधिक हे गेला हम केते परसेंट कहथि ना मोर देन हम जति करचन तो तार 5% मोर टेंपरेचर
5 degree Celsius, 5 degree more temperature they are experiencing. Regulation of gig economy platform. Platform should not impose penalties during heat alert, ensuring worker safety. माने penalty जदि आपण मानकर penalty लगुची ना कि 10 minutes अच्छी माने 10 minutes आपण मानको delivery दबार हो, otherwise there will be a penalty for the workers. That should be removed. That should be removed from the system. Provision for income compensation. Workers must receive financial support for heat induced workplace. जदि किसी भी माने हीट पाइका मु आपण मानको स्टार्टिंग रो कहली जदि अधिका हीट हबो ताले आपण मानकर तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आपनकर हेल्थ एंड लाइवलीहुड व्हाट यू विल मैनेज कि आपण माने हेल्थ को मैनेज करबे ना लाइवलीहुड को मैनेज करबे तो कोठी ना कोठी से जगह रे कोन बा दरकार ना आपण मानकर हीट पाइका जो आपण मानकर वर्क लॉस होची ताको आपण को फाइनेंशियल सपोर्ट जेटा मिले दरकार थ्रू द कंपनसेशन. अडॉप्शन ऑफ इंश्योरेंस बेस्ड मॉडल्स. Parametric heat insurance scheme provide a practical model for compensating heat related losses. So the kono si heat related losses hochi there should be some insurance policy about it. तापर असला गवर्नेंस गैप एंड इम्प्लीमेंटेशन फेल्यूर. तो कौन गवर्नमेंट रो गैप अछि और कौन इम्प्लीमेंटेशन फेल करछि. इनइफेक्टिव हीट एक्शन प्लान. तो जो भी आपण मानकर हीट एक्शन प्लान अछि बट तार enforcement mechanism is lack of enforceable mechanism and accountability reducing to weak policy tool. Also the action plan exists in India but the problem is there is no enforcement was very weak and accountability also. तो weak policy tool विषय को count करना चाहिए. Absence of vulnerability mapping. Most plans fail to identify high risk groups and regions which lead to proper targeting of intervention. बुझिपारे. तो जो भी आपण मानकर फेल हो जाउची कि मोस्ट प्लान आइडेंटिफाई कि हाई रिस्क ग्रुप को माने बा हाई रिस्क रीजन को जगह रे को लोक माने को जगह रे बहुत ज्यादा हीट हवा को जाउची हीट वेव इंपैक्ट करे पे जाउची और को पॉपुलेशन से हीट वेव रे इंपैक्ट हेबे. तापर फेलियर इन लास्ट माइल कम्युनिकेशन. हीट अलर्ट ऑफन डू नॉट रीच वर्कर्स ऑन टाइम. तो जो आपण मानकर हीट अलर्ट अछि सेटा कोन हो ना वर्कर को पाखरे ऑन टाइम रे पहुंची ना स्पेशली इन रूरल एरियाज लिमिटिंग देयर एबिलिटी टू टेक प्रिवेंटिव एक्शन. जदियो गवर्नमेंट हीट वाला अलर्ट दबो कि दीज आर द एरियाज और दीज आर द डेज व्हेन हीट will be maximum, so avoid work or prevention measure तुम नबा कथा. But rural area रे they are not access to such kind of information which is already exaggerating the problem for them. Lack of trained local response system. जदि हमें heat wave देखु चंदी तो ताको local workers like ASA and panchayat officer lack training in the defined roles working response system. तो जदि village level ले although we are having ASA बा पंचायत ऑफिशियल्स अछंती बट दे लैक द ट्रेनिंग से मानक पाखरे प्रॉपर ट्रेनिंग नाही डिफाइंड रोल तांको मानको कोहा जायनी वीक इन द रेस्पॉन्स सिस्टम को से मानकर वीक हेची. ऑन एड्रेस इकोनॉमिक लॉसेस. ओके तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल लॉस हम कि जदि 1% भी राइज reduces 1% 1 degree Celsius rise reduces by 16% and earning fall by 40% during peak heat with no compensation mechanism in place. जदि गोटे भी डिग्री आपण मानकर हीट बढ़िबो हैला तो कोन करबो ना इनकम केते परसेंट 16% और अर्निंग केते परसेंट 14% 40% से कमी देबो इन हीट सीजन माने समर ड्यूरिंग द समर सीजन with no compensation mechanism in place. तो कौन सी compensation mechanism भी नहीं. तो ठीक अच्छी आमे जानिले हीट वेव कौन जानिले कौन कौन प्रॉब्लम अच्छी जानिले और को माने बेसी इंपैक्ट पकोचंदी जाने कहा ऊपर बेसी इंपैक्ट पकोची अब को रीजन ले बेसी इंपैक्ट पकोची ताको भी आमे जानिले. एबे हमको जानिया को पड़िबो कि जदि हीट वेव अछि ताले हम करबा कोन व्हाट वुड बी आवर वे फॉरवर्ड कोन एमती करबा सो दैट के प्रॉब्लम हम सॉल्व हो. Reframing heat as workplace risk. Heat must be treated as an occupational safety issue, not only a disaster event. तो तमें देखो केवल disaster event नो occupational safety issue भी भाभी में कि कामर जो problem होची. For survival dilemma of workers. तो फास्ट होची कौन जो फोर्स वाला जो जिनस होची जो conflict होची भाई health choose करिबो ना livelihood choose करिबो से जो जिनसे को ताको हटेबा दरकार
कहीं वर्कर्स मस्ट चूज बिटवीन हेल्थ सर्वाइवल एंड इकोनॉमिक सर्वाइवल शोइंग सिस्टमेटिक इनजस्टिस बुझिपार तो से भाविया दरकार कि भाई कौन टा चूज कर हेल्थ को आम बेस इंपोर्टान्स देवु ना इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग लास्ट माइल कम्युनिकेशन तो लास्ट माइल कम्युनिकेशन हवा दरकार जो आम रूरल एरियाज देखिले जोटि कि वर्कर्स माने दे आर अनएवर अबाउट द हीट अलर्ट तो से कनेक्टिविटी एते बेटर हवा दरकार सो दैट कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी हम वर्कर्स मैंने भी जापर कि आमर ये प्रोब्लेम हो हीट्र प्रोब्लेम होमको एवं प्रिवेंशन नंबर अच्छे एनश्योरिंग इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी क्लियर मैंने बहुत ज़्यादा क्लियर रेस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी डिफाइंड अक्रॉस एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स तो रेस्पॉन्सिबिलिटी देवा दरकार इवन आल्सो दे फेल to ensure that responsibility then there should be accountable they should be accountable to the government or to the people integrating scientific tools in policy जदियो scientific केमती हे परिबो ना heat index must be used in public communication and decision making heat index आने दरकार expanding disaster finance access तो जदि ये देखिबा स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड अछि बा नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड अछि ताको कोन करे फुल यूज जेमती करि परतो रेदर देन यूजिंग द 10% ओनली फॉर द हीट वेव्स देखो 10% एथि पई कि अछि कोथ पई कि ना बाकी जब किसी डिजास्टर हो ताले कोड पैसा से हीट पई ही सब खर्च हो जिवो बट फिर भी बहुत ही कम अछि बहुत ज्यादा इनएडिक्वेट अछि काहे ना एबे ओ हीट वेव गोटे रीजन स्पेसिफिक है कि नहीं एबे पूरा नेशन वाइड सदा आसिलानी पूरा नेशन पूरा सब नेशन ले से जिंस फील हेलानी तो से आपको देखिए पड़ो कि आप केमती यूज कर फॉर द इफेक्टिव रेस्पॉन्स अडॉप्टिंग वर्कर्स सेंट्रिक गवर्नेंस पॉलिसीज मस्ट प्रायोरिटाइज मोस्ट एक्सपोज्ड एंड वनरेबल वर्कर्स जो भी पॉलिसीज रहा कौन कर प्रायोरिटाइज करा दरकार कि मोस्ट एक्सपोज को माने सैनिटेशन वर्कर माइनिंग रे जो माने काम करते बेसी बेसी से इम्पाक्ट होचन तो से मस्ट बी प्रायोरिटाइज मोस्ट एक्सपोज एंड वनरेबल वर्कर्स माने वनरेबल वर्कर से हवा दरकार कंक्लूजन तुम लिखि पारिबो इंडियाज हीट क्राइसिस एक्सपोज द डीपर फेल्यूर ऑफ गवर्नेंस and legal protection not a lack of scientific understanding not be able scientifically misunderstand करछि about the heat wave that is not correct india कोठी ना कोठी फेल करिछि as a governance रे legal protection weak laws हेगला limited funding हेगला poor implementation leave vulnerable workers unprotected जो माने vulnerable workers अछंती सेमान को unprotected कौन पे हेछि ना बहुत limited funding अछि up to 10% of state response और sorry state disaster response fund 10% अछि तापर आपन poor implementation many of the policies are advisory not accountable administrators are not accountable तापर आपन मानकर जो alert आसे कथा that also not reaching to the very vulnerable groups or the population are living residing in the rural areas तो से जिन तगर पहुंच ही पारोने से माने बगर information addressing this requires closing the legislative vacuum through enforceable rights, adequate financing and accountable systems, ensuring that thermal safety becomes an essential part of occupational justice and constitutional protection. तो कौन दरकार कि थर्मल सेफ्टी हम दरकार जोड़े गोटे essential part of the occupational justice rather than कि हम कहबे कि disaster risk it should be included inside the occupational justice हम दरकार और constitutional protection देखो मिलना दरकार मेंस में का अपन में गोटे क्वेश्चन अछि discuss how India's heat crisis reflected legislative and governance vacuum and examine its impact on vulnerable workers तो पिला माने ट्राई करिवो कि तुम माने लिखिया पे क्वेश्चन को कोन लिखु छ जहां बुझिलो बेसी नहीं अपन माने 250 वर्ड्स रे को लिखिया पे ट्राई करिवे ओके 250 वर्ड्स जदि भला भाबरे आपण पीडीएफ को देखिबे तो पीडीएफ को पढिबे बारंबार ताहले आपण माने बा जो माने भी हिंदू एनालिसिस देखुछ बा पढुछ से माने इजीली क्वेश्चन को टैकल करि परिबो बा लिखि परिबो ओके चलो अब हम आगो जीवा आउट आप छोट जिनसा गोटे न्यूज आसला कि भाई राइट अबाउट राइट टू वोट इन इंडिया राइट टू वोट तो राइट टू वोट समस्ते अवेलेबल लाଗୁଛି राइट टू वोट अछि माने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हेतिबो तो दिस इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ओके तो राइट टू वोट इन इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी राइट
created and regulated by law, not a fundamental right. ना constitutional भी right नो बा fundamental right नो तो एटा गुटे को right ना एटा होची आपण मानकर देखो देखो एटा होची आपण मानकर statutory right statutory तले जो जे कोनो जिंस created regulated by the law हेतु ताको हम statutory right कहबो fundamental right माने already तुम जानते हो part 3 of the constitution fundamental right exclusively mention कि those are the fundamental rights तो हमर fundamental right होची थर्ड हमर fundamental right होची ओके चलो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रोविजन ऑन वोटिंग कौन कौन से देखि दबा ना प्रथम वाला आर्टिकल 326 326 कौन कहूची इट प्रोवाइड द बेसिस ऑफ इलेक्शंस थ्रू यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज माने कौन जो मानकर 18 इयर्स एबव हेतिबो सब्जेक्ट टू लीगल डिस्क्वालिफिकेशन लीगल डिस्क्वालिफिकेशन अछि जने जदि जेल रे अछि तनकर मेंटल कंडीशन खराब अछि सो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस प्रोसेस तो जो माने हेल्दी माइंड अछि जो माने जेल रे नाहदे से माने कोन करि परिबे ना से माने सिटीजन हेतिबे अगेन सिटीजन्स नॉट द एलियंस और अदर कंट्रीज पॉपुलेशन रिजाइडिंग इनसाइड इंडिया से माने भी नो सिटीजन हेतिबे और कोनोसी लीगल डिस्क्वालिफिकेशन तांग भीतर हे नथिबो सो दे कैन perform this right to article under article 326 above the 18 years of old presentation of the people act 1952 kon achi it disqualified non citizens and requires voter to be ordinary residents and at least 18 years old representation of the act 1951 kon achi it allow enrolled individual to vote unless qualified or imprisoned unless जते बंद से क्वालिफाई अछि जते बंद से डिस्क्वालिफाई हेनी बा माने क्वालिफाई करूची टू वोट तो से माने को एनरोल करा जिवो टू वोट और इन प्रिजन भी हेनी माने कोन जेल जाय नथिबो thus right to vote is subject to legal conditions and not absolute जो एकदम को प्रीलिम्स में क्वेश्चन आसे right to vote is a absolute right it is statutory right first right to vote is a absolute right the answer is no right to vote is not a absolute right because it is also subject to the legal disqualification तापर देखिए कि मेजर सुप्रीम कोर्ट व्यूज कौन कछि ना एनपी पनुस्वामी केस 1952 रे the court held that the right to vote is purely statutory तापर ज्योति बासु केस आसला 1982 it reaffirmed that voting is neither a fundamental nor a common law right PUCL versus Union of India 2003 रे it clarified that voting is statutory but right to know candidate details is fundamental under article 19(1)(a तो ए वाली टाइप रो क्वेश्चन ही तुम मानको प्रीलिम्स रे पकाइबे जदि यूपीएससी पई का पढुछ तो ए टाइप रो टिके टिके तुमको पचारे कि केते डिटेल तुम जानते बट ओपीएससी पई ए टाइप रो क्वेश्चन ता एजे हम देखि ना फिर बट वी नेवर नो तो हमको सब प्रकार प्रिपेयर हे कि जिबार अछि कि जदि हम देखिबे कि राइट टू वोट हमें वोट दे परबे कि नहीं सेटा हो अपन मानकर स्टैट्यूटरी राइट बट right to know candidates details this is your fundamental right if somebody जो जदि कोनोसी भी पार्टी रो कोनोसी भी गुटे रिप्रेजेंटेटिव आपण मानको कॉन्स्टिट्यूशन ले कहले कि भाई मैं एथर इलेक्शन ले लड़बी तो तांकर डिटेल जानबे तर फाइनेंशियल एसेट कोन अछि तर बाकी कोन एसेट अछि तर फैमिली बैकग्राउंड कोन अछि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोन अछि if any case is pending on that on the name of that person कि को केबे केबे और accuse हे कि केबे केबे कोन है सब जक information you get and that is your fundamental right that is not your statutory right कोर्ट रे आसु ना आर्टिकल 19(1)(a तबरे कुलदीप नायर 2006 रे कोन हेतिला ना it again confirmed that the right to vote remains statutory in nature significant kon the supreme court emphasized that voting carries both constitutional importance and strong sentimental value for citizens तापर हमें देखिबे कि एटा अपन जानते राइट टू वोट माने कोन तो धीरे छोटो गोटे आर्टिकल अपन मानकर प्रीलिम्स पई का इंपोर्टेंट ओके मु आशा करछि कि जो मानकर प्रीलिम्स पई का जदि क्वेश्चन एथर आसिला अपन माने निहाती क्वेश्चन करि परबे तापर से अबाउट स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 तो स्टार्टअप इंडिया जो 2.0 रे कोन आसी छि पीआईबी रे गोटे आर्टिकल हम जाने स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड 2.0 टू मोबिलाइज वेंचर कैपिटल फॉर इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम ओके
चलो तो कहते हैं 10,000 crore purpose to support deep tech driven manufacturing of early growth startups. तापर आपण मानकर कोन अछि mobilize long term democratic capital and strengthen India's venture capital in ecosystem. venture capital माने कोन बिला माने ना जत्ते बेले कोनोसी भी गोटे कंपनी बहुत ज्यादा माने पोटेंशियल अछि बट बहुत अर्ली स्टेज रे अछि ओके एनी कंपनी सपोज अछि so the new company अछि तो न्यू कंपनी रे कोन अछि it is the potential तो potential तो यार अछि बट अर्ली स्टेज रे अछि तो एठी कोन हबो ना प्राइवेट जो कंपनी अछि ना तो प्राइवेट जो जिंस अछि से माने एठी कोन करबे इन्वेस्ट करबे स्टार्ट करबे बट with exchange of not with exchange of money or profit with exchange of equity शेयर नहीं कि तुमने जदी कौन करबे ना ए जगह रे कौन करबे ना इन्वेस्ट करबे स्टार्ट करता कम करबे वेंचर कैपिटल चलो तो तमाने कौन ना इट इज गवर्नमेंट बैक्ड फंड विथ 10,000 crore purpose to mobilize venture and growth capital for startup तो startups जो गवर्नमेंट जो अपन मन कर भी जो मोदी गवर्नमेंट अछि ना जो बीजेपी रे गवर्नमेंट अछि जो जो अपन रूलिंग पार्टी अछि तार सब बेले मोटो ये रहउछि कि हम कंट्री रे people are always or people had been always there to ask job do not be a job seeker be a job giver ଆଉ एंटरप्रेन्योरशिप बढ़िया दरकार स्टार्टअप्स बढ़िया दरकार एमएसएमई सेक्टर बढ़िया दरकार देखो दुईटा रीजन अछि फर्स्ट तो अनएम्प्लॉयमेंट जो प्रॉब्लम अछि अनएम्प्लॉयमेंट को कोन बना टैकल करहे परबो थ्रू दिस प्रोसेस कोन बना जते आपण मानकर इंडस्ट्री वाला सेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन वाज वेरी वीक इन इंडिया तो सेकेंडरी सेक्टर जदि आपण देखिबे तो सेकेंडरी सेक्टर इंडिया रे बहुत ज्यादा डेवलप है तो सेकेंडरी सेक्टर जोटा थाए सेटा आपण मानकर थाए लेबर इंटेंसिव सेक्टर जदि लेबर इंटेंसिव सेक्टर हुए ताहले ही कोन हम ना सेठी आपण माने बेसी लेबर से मानको दरकार हे परबो से माने बेसी लेबर कोन करबे रिक्रूट करबे और जदि अधिक से लेबर रिक्रूट करबे जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम अछि दैट कैन बी सॉल्व ओके तो सेति में गवर्नमेंट चाहूँ कि बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स हो और स्टार्टअप्स सेमती नुह जे कौन सी जो जिन से पोटेंशियल अच्छी जो जिन आगू बढ़िबार अच्छी ताको स्टार्टअप करिया दरकार काना हम कंट्री रे एबे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड अछि डेमोग्राफिक डिविडेंड माने कोन ना आपण मानकर जो मानकर वर्किंग एज पॉपुलेशन working age is greater than the dependency age. Dependency is 0 to 14 but above 60 years. Working माने कितने 15 to 59 तो ए एज रे जो पॉपुलेशन अछि एमानकर पॉपुलेशन अधिक अछि नाउ more people can work for less people dependent on them which was तो एज इज द बेस्ट टाइम फॉर ए कंट्री टू ग्रो तो सेट गवर्नमेंट चाहूँ स्टार्टअप्स आसु एमएसएमई आसु एंटरप्रेन्योर आसु तापर मिनिस्ट्री एटा जो आपण प्रीलिम्स रे पचारि करे को मिनिस्ट्री अछि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंप्लीमेंटेशन एजेंसी किए ना स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी will operationalize the scheme along another domestic agency aim कौन ना aims to mobilize long term domestic capital जो long term domestic capital अछि ताको mobilize करिवो strengthen the venture capital ecosystem venture capital में बुझे देली private जो जिनस अछि से माने इन्वेस्ट करिवे on those companies which having very good potential but new companies so in the exchange of not on the exchange of the profit but in the exchange of equity and support innovation led enterprises entrepreneurship the innovation led हेतिबो ना टेक हेतिबो funding mechanism कोन ना fund will be invest in SEBI registered alternative investment fund which will further invest in startups through equity and equity linked instrument तापर आसला eligibility कोन हेतिबो eligibility entities are SEBI registered alternative investment fund that receive support under the scheme जदि माने एसबी तो SEBI रो register under आसुतबे से माने ही केवल support पाइबे under the scheme duration कोन हो ना investment under the scheme will be made over the 16th and 17th finance commission cycle तो एबेस 15 16 वाला आसीची 2026 to 31 again आसीबे 31 लास्ट 31 to 36 तो 5 years अपन मानकर generally finance commission आसे but that doesn't mean that this is mandatory not mandatory depends upon the president if president wants then early they be
और लेट रे भी से ना अर्ली रे भी कौन करिवो ना फाइनेंस कमिशन को से एस्टैब्लिश करिवो डिपेंड्स अपॉन द प्रेसिडेंट। तापर कोन फी फीचर कोन अछि ना सेगमेंटेड फंडिंग अप्रोच अनाइछि फोकसेस ऑन डीप टेक अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर structured governance selection of AIFs will be done by venture capital investment committee with monitoring by the empowered committee। तब स्ट्रक्चर कराला कि भाई को कमिटी द्वारा ताको कोन बना सिलेक्शन करा जिवो कमिटी द्वारा ताको मॉनिटर भी करा जिवो। नेशनल रीच कोन अछि प्रमोट इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड मेजर सिटीज टू एंश्योर वाइडर इनोवेशन। तो केवल मेजर सिटीज मान कर नो जोटा कि सेमी अर्बन जो जिनस अछि सेति भी पर जो जगह रे माने स्टार्टअप को भी जगह नहीं पर नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द मेजर सिटीज एड्रेसिंग कैपिटल गैप्स इट डायरेक्ट्स फंड्स टुवर्ड्स हाई रिस्क एंड कैपिटल इंसेंटिव सेक्टर्स। तो जोटा हाई रिस्क अछि सेतरे भी अपन मानकर फंड देबो। हाई रिस्क माने कोन ना we don't know whether this company will work or this startup will work or not, so that is a high risk। तो कौन से इन्वेस्ट हमें करते ना which is high risk तार रिटर्न भी अपन को अधिक मिलबो। हेलो significant कौन it will strengthen economic resilience, generate high quality jobs, position India as a global innovation hub। इनोवेशन हब हिसाब से गवर्नमेंट इंडिया को रखिबो। स्टार्टअप रे कोन करबा को जिन नथिबो ना नुवा गोटे कोन इनोवेशन करबा अप्लाइड करके करि परबा जो भी अपन मन टेक्निक अछि जो मशीन अछि अप्लाई करके करि परबा अदर्स कि नुवा गोटे इनोवेटिव आइडियाज हम कि करियो दैट इज ओनली स्टार्टअप। तो आउ कोन अछि ठीक देखि देबा कि फंड्स 1.2 रे कोन थिला 2.4 रे हम देखिले 1.4 ठीक देखि पे पड़बो काई ना ऑटोमेटिकली दिस बिकम्स इंपोर्टेंट। तो लॉन्च एंड प्रपोज के बेतला इट वाज लॉन्च इन 2016 अंडर स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान एड्रेस फंडिंग गैप्स। तो 10 इयर्स लमसम हे गेला 10 इयर्स पर 2.0 हला कॉर्पस यूटिलाइजेशन हला 100,000 करोड़ वाज allocated under the scheme same now also same system role code it helps nurture first time funders and strengthen the domestic venture capital ecosystem। एबे भी से जिंस अछि तको स्ट्रेंथन करे पई का चाहौ छ। ओके तो रायमोना नेशनल पार्क आपण मानकर न्यूज रे थिला ताको टिके हमें देखिबे कि रायमोना नेशनल पार्क विषय कोन अछि टिके पढिबा। लोकेशन देखि देले पिला माने से पचारला कि कोट अछि इंडिया रे को जगह रे अछि को स्टेट रे अछि। ओके ताको तुमको मन रखे पे मरो के एडा हो कोट अछि ना आसाम रे अछि देखिबा ना। रायमोना नेशनल पार्क इज a critical conservation area part of the eastern Himalaya foothills diversity hotspot। जो डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को केते बळे होई जान छ ना नहीं जेते बळे बहुत ही ज्यादा सती माने बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट हे जे कि ताको फ्लोरा बा जो फौना अछि ताको कंजर्वेशन करबा से जगह को गवर्नमेंट डिक्लेयर करे एज हॉटस्पॉट ताको हॉटस्पॉट हिसाब से ताको डिक्लेयर करे। लोकेशन कोड अछि ना पार्क इज लोकेटेड इन द Gasagan subdivision of Kokrajhar district in Bodoland territorial region Assam। तो आसाम रे अछि नियर द इंडिया भूटान बॉर्डर। तो इंडिया और भूटान रो बॉर्डर रे पार्क पे अछि। तब हम देखियो ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन कोन अछि इट फॉर्म्स ए ट्रांस बाउंड्री लैंडस्केप विथ भूटान फिफ्सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड जिग्मी सिंगाई वांगचुक नेशनल पार्क and West Bengal's Boxer Tiger Reserve covering more than 2,400 square kilometers। तो कौन ट्रांस बाउंड्री रहिबो भूटान लगो फिफ्सको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ता सहित जिग्मी सिंगी वांगचुक नेशनल पार्क अछि वेस्ट बेंगल बक्सर टाइगर रिजर्व। तो ये तीनटा जगह ट्रांस बाउंड्री। टोपोग्राफी park lies in the eastern Himalaya foothills with altitude ranging from 85 meter to 1042 meter। मेजर रिवर कौन अच्छी ना संकोच रिवर फॉर्म द वेस्टर्न बाउंड्री सारला भांगा रिवर इन द ईस्टर्न बाउंड्री एंड द रेकुआ रिवर इन द सदर्न बाउंड्री। बहुत ज्यादा डिटेल ले तुमको पढ़िबा दरकार ए जिंस कोन पे ना प्रिलिम्स रे आमे कहि परबेनी कि कोन क्वेश्चन पचारिबो रिवर पचारिबो ट्रांस बाउंड्री पचारिबो ना लोकेशन पचारिबो ना अपन मानकर रायमोना नेशनल पार्क कोठी जगह अछि कोन कोन को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट रे एटा आसुची ईस्टर्न हिमालय फुटहिल्स। ओके ईस्टर्न हिमालय फुटहिल्स आसुची। तो प्रिलिम्स रे कहीं भी अपन मानको कहि भी परबेनी कोन क्वेश्चन आसीबो। तो प्रिलिम्स रे अपन मानको कोन करे पे पड़बो द बेस्ट यू कैन डू अबाउट कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसीची ना
तो ताकू आपण माने बारंबार बारंबार देखंतु को टॉपिक को बेसी इंपोर्टेंट दोछि को जगह से क्वेश्चन पचारछि आ को टाइप रे पचारछि ना बहुत ज्यादा फैक्चुअल पचारछि ना स्टेटमेंट वाइज भी पचारछि एनालिटिकल पचारछि तो सही अनुसार आपण को प्रिपेयर होणार अछि ना बेसी फैक्चुअल पढ़िबार अछि ना एनालिटिकल व्हाट एवर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन डिमांड कोन अछि एग्जाम में सही हिसाब रे पढनु अल्टीमेटली if you're reading all the things are happening around you or all the news you're interested in running, this is a good habit, but the thing is when this is coming to qualify this exam, so what is mentioned strictly in the syllabus, please stick to that. If you are strictly following the syllabus and reading everything inside the syllabus means you are going to qualify this exam very easily. Okay, तापर से कौन वेजिटेशन कौन अच्छी it has about 380 plant species including tropical forest orchid river and grasslands multiple forest type like moist deciduous and evergreen forest flora कौन अच्छी the park features tree species such as कम विशाल है गला teak है गला बनिया है गला assam rosewood bamboo species bonsura balcona along with orchid including cymbidium and dendrobium तापर फना कौन अच्छी ना गोल्डन लैंगुरेडी मिले पड़े जोटा कि एंडेमिक स्पीसीज एंडेमिक मतलब स्पेसिफिक रीजन ने कोटे कोटे स्पेसिफिक रीजन ने स्पीसीज अवेलेबल है नॉट एवरीवन तो सही जगह ही से केवल अवेलेबल थिबो तो एंडेमिक स्पीसीज कौन अच्छे अपन देखिए गोल्डन लंगूर एशियन एलिफेंट रॉयल बंगाल टाइगर क्लाउड लियोपार्ड देखो रॉयल बंगाल टाइगर तो अपन मानकर सुंदरबन अच्छी तो जोटा बॉर्डर अच्छी ट्रांसबॉर्डर आम देखला वेस्ट बेंगल सहित से हमको रॉयल बंगाल टाइगर देखा concluded leopard wild water buffalo and 170 bird species and 150 butterfly species एमाने भी देखा पे मिलबो significant कोन अछि the park is important for golden langur conservation and is an elephant corridor connecting Assam plain and with Bhutan hills Assam सहित भूटान को से कोन करछि कनेक्ट करूछि तो गोल्डन लैंग्वेज जोटा अच्छी तार आयुष्यन स्टेटस कौन अच्छी एंडेंजर्ड ओके आयुष्यन स्टेटस बेले बेले पचार दोची तो एंडेंजर्ड चलो तापर नेशनल पार्क जो तो नेशनल पार्क गोटे आसी गला न्यूज रे तो आउ कौन नेशनल पार्क अच्छी कोठी ना आसाम रे आसाम has 8 national parks that protect diverse ecosystem rich biodiversity and wildlife habitats across flood plains, forest and Himalayan foothill regions. तो कौन सब आप मनकर आउरी नेशनल पार्क अच्छे देखा गोटे हूँ आप मनकर काजीरंगा नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क तो ये कौन अच्छी इम्पोर्टेंट फॉर सपोर्टिंग 70% ऑफ वर्ल्ड वन हॉर्न डायनासोर तो 70% ऑफ द वन हॉर्न डायनासोर कोटे हमको देखा मिलूँ काजीरंगा नेशनल पार्क जोटा कि अपन आसाम अच्छी तापर अपन मानस नेशनल पार्क जोटा भी अपन आसाम अच्छी ओके आसाम along with Bhutan border important high biodiversity hold status of tiger reserve biosphere reserve and world heritage site so तुमको पचारे कि नेशनल पार्क इज ओनली नेशनल पार्क नो नेशनल पार्क भी टाइगर रिजर्व भी बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ हेरिटेज साइट भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिब्रू सिकोआ नेशनल पार्क ऑल्सो लोकेटेड इन आसाम रिवरलाइन रिजन जोटा कि इम्पोर्टेंट कौन पाई ना सपोर्टिंग गेंगेटिक डॉल्फिन्स एंड माइग्रेटरी बर्ड्स नमेरी नेशनल पार्क अच्छी जोटा कि सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट रे तो यहाँ गोटे नमेरी टाइगर रिजर्व सपोर्टिंग डाइवर्स मामल्स एंड रिवरलाइन इकोसिस्टम ओरांग नेशनल पार्क अच्छी सपोर्टिंग राइनोसोर्स एंड बेंगल फ्लोरिकन हैबिटेट तापरे देहिंग पटकाई नेशनल पार्क ओके जोटा कि एलिफेंट मानक अच्छी तापर आपंकर राइमोना नेशनल पार्क एवं आपको कहली ट्रांसपेरेंट इकोलॉजिकल कॉरिडोर सपोर्ट गोल्डन लैंगुर आइसोन स्टेटस मन पे पे एंडेंजर तापर अच्छे शिखा जवलाओ नेशनल पार्क
जोटा कि 8th नेशनल पार्क डिजाइन इन मार्च 2025 स्ट्रेंथनिंग कंजर्वेशन नेटवर्क। ओके, तो एठी भी आपण मानकर कौन अच्छी ना बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन ऑफ आसाम रे हमको देखिया पाई मिले। तो एति जिनस आपन को मन रखिया पाई पड़िबो। तापर हम देखिबा कौन देखो जे कोनोसी जिनस न्यूज रे आसिला माने तार स्टैटिक पोर्शन को आपन को जिबा पाई पड़िबो, ताको देखिया पाई पड़िबो, काना जते न्यूज रे आसी गला तो स्टैटिक आल्सो बिकम्स इंपोर्टेंट। कोनोसी गोटे टॉपिक न्यूज रे आसिला माने स्टैटिक वाला भी इंपोर्टेंट हो गला। आ गोटे पिला मन रखो कि जो आपण मानकर ओएस वाला जो एबे जो अच्छी चैनल बा ओएस वाला सेंटर अच्छी कोचिंग सेंटर इफ आर इंटरेस्टेड कि ओडिसा रे को भी गोटे जगह अछि जोटी आपण मानकू केवल कि पिला केते रहबे जानचो 25 रु 30 25 रु 30 पिला आपण मानकर गोटे बैच रे रहबे। तो आपण मानकर एक्सेस रहबो टू द एजुकेटर, एक्सेस आपण करि परिबे एजुकेटर मन से तो पचारि परिबे क्वेश्चन आउ फ्रीली आपण माने पढ़बे। कम पिला माने टीचर बेसी कौन कर पारे ना समस्त को ध्यान दे पारे। तो जब इफ आर इंटरेस्टेड कि आपन को ओएस बनवार अछि आपन रे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन माने रेगुलेटेड वे रे बा अप्रोच करे पे चाहउछन सिलेबस पढ़े पे चाहउछन तले ओएस सब आपन थरे विजिट करंतु म आपन को कहूची। आ जोठी कि आपन माने डेमो क्लास देखिबे, डेमो क्लासेस देखिला परे आपन माने डिसाइड करिवे कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। एंड सेकंड कथा ला कोन ना सोशियोलॉजी ऑप्शनल जदी जोठी भी आपन माने रेडी सब बेटर पढ़ाउची जहार जोटा कि ललित सर जो क्लास नौचंती। ओके, ललित सर सोशियोलॉजी रो जो क्लास नौचंती तो आपन जे सोशियोलॉजी ऑप्शनल पाइका पढ़िया पे चाहउछंती तो आपन को एटो बेटर प्लेटफॉर्म कोठी भी मिलिबो नाही। तो सोशियोलॉजी आपन एटी पढ़ि परबे, ऑप्शनल आपन बाबू तो बहुत इंपोर्टेंट हो गला काना जीएस तो समस्त पढ़ुचंती तो ओनली डिफाइन करबे कि आपन पाखरे ऑप्शनल आपन केते मास्टर रे एक्स्ट्रा मार्क काढुछे दैट विल डिफाइन योर रैंक। ओके, तापर हम देखिबा बाली पैटर्न कॉम्बैट एक्सरसाइज। तो जो भी एक्सरसाइज अच्छी बात जो भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप हम यदि कोर्ट भी देखो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। हाँ, ओपीएससी मेंस रो ओपीएससी मेंस रो सिलेबस नुह बट प्रिलिम्स रे ए क्वेश्चन से पचारिबो अगेन इज आल्सो प्रिलिम्स रे अपन मानकर इंटरनेशनल रिलेशनशिप अच्छी। सेकंड जिंस होची कि करंट अफेयर पार्ट ऑल्दो कि से अपन को मेंस रे यार सिलेबस नहीं बट करंट अफेयर आउ इंटरनेशनल रिलेशन। चलो देखिबा तो द लार्जेस्ट बायलैटरल मिलिटरी एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन द आर्म फोर्स ऑफ द फिलीपींस एंड द यूएसए। तो फिलीपीन आ अपन मानकर यूएस द्वारा जो अपन मानकर एक्सरसाइज है दैट इज बाली पैटर्न कॉम्बैट एक्सरसाइज। बुझल पाठ तो मन रखिबो को कंट्री भीतर होची यूएसए आ फिलीपीन रा एक्सरसाइज है known as the shoulder to shoulder an exercise reflecting the spirit of exercise and symbolizing the strong alliance between Philippines and United States. It held annually, annually designed to strengthen regional security through combined operations. Combined operation द्वारा regional security को से मैंने कौन करेंगे ना strengthen करेंगे चाहते हैं। First edition के भी इतला 2001 ले 16 लेटर ला 41st लिटरेशन ऑफ द एक्सरसाइज एडिशन। ओके, तापर ड्यूरेशन कोन इज स्टार्ट फ्रॉम केबे स्टार्ट हबो ना 20th अप्रैल टू 18th मे एबे इजेंटली स्टार्ट हबो। पार्टिसिपेशन विल मोर देन 17,000 soldiers from 7 participating nations will be taking part in the exercise। 7 participating अपन मानकर लेसन अछि केते जण सोल्डर आसीबे ना सोल्जर्स आसीबे सोल्डर कहबे सर तो सोल्जर्स के जन आसीबे 17,000। तो आपण मु काहे के जिंस कहूची कहिना ओपीएससी रे गोटे माने आदत अछि ओपीएससी रो यूपीएससी तो बेसी डाटा ऊपर को फोकस करेनी बा बहुत डाटा ओरिएंटेड क्वेश्चन पचारेनी बट ओपीएससी बेले बेले ई जिंस करे क्वेश्चन डाटा डायरेक्ट दे देथिबो। तो तापर कोन हो ना टॉप विल कम फ्रॉम फिलीपींस यूएसए ऑस्ट्रेलिया जापान कनाडा फ्रांस एंड न्यूजीलैंड। It would be the first time since World War II that Japanese combat troops will be on Philippine soil. This is why this has become important. After the World War II, never Japanese troops went to the Philippines. But it's the first time. Also, for the first time, Japan will fire a type of 88 ground to surface missile during the drill. जो drill हमको जाउची जोड़े कि 20 April to 8 of May पर्यंत चलिबो। सेतरे कोन बना जापान will the fire to a type 88 ground to surface missile। Activities conducted कौन about drill cover land, sea, air and cyberspace domain। तो ए जिंस रे केवल 1 2 3 4 टा मन रखिबो गोटे land, sea, air
outer cyberspace. The drill typically involves a wide range of activities including maritime security, amphibious operations, humanitarian assistance and disaster response. तो एतिक जिनस आमर आज थिला जोटा कि आम आज कंप्लीट कले बोथ आपनकर मेन्स आपन गोटे कहली प्रिलिम्स भी कहली जेकोसी जिन सपोज आपनकर इंपोर्टेंस आसो बोथ प्रिलिम्स और मेन्स हम डिस्कसन करबा क्वेश्चन भी डिस्कसन करबा आज आपण मानकर ए जिन हम डिस्कसन कले काली हमने आउ थे अपन देखा 9 AM पिला माने समस्ते सेशन जदि भल लगुची बा कोठी आपण मानकू आउ कोन दरकार अछि न्यू जिन आपण कोन चाहउचंती इन दिस यूट्यूब चैनल और प्लेटफॉर्म यू कैन कमेंट अस ओके और निहाती भाବରେ जॉइन करंतु आपण फ्रूटफुल हबो बुझिपाले ना नहीं समझते थैंक यू।